Now, ladies and gentlemen, summers in Delhi NCR are notorious for being unforgiving. If you are watching us from Delhi NCR, scorching heat and mercury levels inching close to 50 degrees is not new to you. But what has left citizens outraged are the massive power cuts in the middle of a heat wave, sometimes for as long as 10 long hours. Today, we are keeping our focus on 3 metropolitan cities in Delhi NCR. But I'm sure there are many parts of this country where citizens might be facing relentless power outages. Before I begin the show, I want you to take a good look at these reports from Ghaziabad and Noida on how power cuts have left citizens angry and oftentimes sleepless. मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बीते कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट पावर कट्स हो रही है? कितने घंटों के लिए लाइट जा रही है? कितने घंटों के लिए लाइट जा रही है? देखो, रात को तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता, रात को भी पता भी चलता है। देखो, इन्वर्टर वगैरह जब तक चलता है या जनरेटर चलता है, पर जो लाइट फ्लक्चुएट करती है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अरे हमें नॉलेज नहीं होती कि कितनी देर में लाइट आ रही है, कितनी देर में पता तो होना चाहिए ना, लाइट इतनी देर में आ रही है, उसको हम कुछ अपना अरेंजमेंट भी करके रखें या कुछ है, पर कुछ सुनवाई नहीं है कहीं भी किसी भी तरह की। उनसे बताइए हम क्या कर सकते हैं। अभी जैसे आज भी गई थी, 2 घंटे तो गई रही लाइट, तो वो तो क्या है, आपका इन्वर्टर चल रहा है या जनरेटर चल रहा है, दैट कैन सफाइस। बट उसके बाद अगर जाती है तो अब बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिड वेदर एंड ऑब्वियसली टाइम पास करने का भी कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, बाहर इतनी गर्मी है, देयर इज़ नो प्ले, एवरीवन इज़ सफरिंग, क्या बड़े क्या छोटे, हर किसी को कोई ना कोई अपने इश्यूज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पावर कट। नहीं, सॉल्यूशन तो देखो करेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कि हम लोग तो जो लेडीज़ तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। अब बच्चों का बड़ा चक्कर पड़ता है, बच्चे हमारे बेटे हैं, थोड़े मैं रेंट पे लड़कों को दे रखा था, वो लड़के भी हैं। अब वो बेचारे इतने परेशान होते हैं, कहते हैं दिन में उनका एग्ज़ाम होता है, पूरी पढ़ाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ हम कंप्लेन करते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं, हायर अथॉरिटी से भी मिलते रहते हैं, और जेई और एसडीओ लेवल पर तो हमारी बात रेगुलर होती रहती है। वहाँ से यही फीडबैक मिलता है, बस थोड़ी देर में ये ब्रेक डाउन हो गया, ये केबल बस्ट हो गई या कोई ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम आ रही है, शट डाउन लिया है, मगर कोई सर्टेनली या टाइम का कोई भी वो नहीं है कि किस टाइम आएगी, कब जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सॉल्यूशन है। सडनली लाइट चली जाएगी और उसका जो है कोई पता नहीं है। देखिए, इस समय चूंकि गर्मी चरम पे है और मुझे लगता है कि दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है और एक 1.5 घंटे तक बिजली वापस नहीं आती है। तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, इन्वर्टर जवाब दे देता है, बच्चों के पढ़ाई भी प्रभावित हो रहे हैं, चूंकि बिजली नहीं होगी तो पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार हैं, चूंकि मार्केट का एरिया है, बिजली नहीं होती है तो दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं और शिकायत करने पे किसी प्रकार का कोई सुनवाई भी नहीं है। बिजली की समस्या इतनी है मैडम कि मेरे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, लैपटॉप का जो है 45 या 50 मिनट होता है उसका करने के लिए, तो बच्चे आगे पढ़ने के लिए बड़ा दुख होता है। और जिस भी उसमें जाते हैं हम लोग बिजली वालों के, उनका जवाब होता है कि पीछे से गायब है, मतलब वो आते नहीं हैं, पीछे से गायब है जी। सिर्फ ये लास्ट में हम एक ही जगह जा सकते हैं, हमारे शास्त्री नगर, तो शास्त्री नगर में जाएंगे कि मुरादनगर से ये ग्रेड डाउन है जी, आपका ग्रेड डाउन है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रही है मैडम। और ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन को नहीं हो रही या किसी चीज़ को नहीं हो रही, लेकिन ये बड़ी दिक्कत है। बिजली है कम से कम 6-7 घंटे तक बिजली आती, कभी आ रही है कभी जा रही है। अब बताओ दुकानदार आदमी क्या करेगा ऐसे में, जो 2 रोटी कमा रोजी करने वाला है वो तो बेचारा बैठा ही रहता है सारे दिन। रात में थोड़ी काम होगा बिजली से। काम का लॉस हो रहा है, सभी का काम, हम भी काम कर रहे हैं दुकान में, सुबह जाती है दुकान खोलते हैं 9 बजे, उसके बाद में लाइट चली जाती है, तो अब क्या करें हम, कुछ करने का कुछ विकल्प ही नहीं है हमारे पास। विकल्प ही नहीं है, सुनता भी नहीं है मैडम कोई जाते हैं बोलते हैं उनके पीछे से दिक्कत है, आप बताइए क्या करें हम। Load shedding has been a concern that brings citizens to the streets every summer. The demand for electricity continues to rise every single year.
The peak power demand was recorded at the highest this season at 6,919 megawatts. At the outset, this may look like an electricity supply issue. But at the heart of this is the larger infrastructure issue. In fact, there has often been a power surplus in states like Haryana, but the issue lies in the outdated infrastructure and its efficient management. Poor conditions of transformers, old cables, rusted poles, and unused feeders are at the crux of this issue. During peak summers, the existing infrastructure becomes overstretched, and then it starts a series of load shedding and unscheduled outages. We've had no power cut zones in Noida reporting blackouts for 3 hours. Noida Residents Welfare Association have been demanding a power upgrade for years. From cable breaks to overheating of transformers, the taxpayers have been demanding an overhaul in the power infrastructure. But the UP Energy Minister, however, says that there has been an uptick in both the demand and the consumption of power, but has cautioned against politicizing the crisis. Listen in. उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में बिजली क्राइसिस की खबरें आ रही हैं। लगातार समाजवादी पार्टी ने कल बकायदा ट्वीट भी किया था। बात करेंगे, हमारे साथ पावर मिनिस्टर हैं AK शर्मा जी हैं। शर्मा जी, कल समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया, कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है। कई सारी खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के, खास करके नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिले, वहाँ भी जब लोगों को तैयार होने का समय होता है, ऑफिस जाने का, बिजली नहीं रहती है। समाजवादी पार्टी के समय में जो उनकी अधिकतम डिमांड होती थी, उतनी हमारी न्यूनतम डिमांड चल रही है। 2012 से लेकर के 22 तक में जो सबसे अधिकतम डिमांड रही है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभी कल परसों हम लोगों ने 26,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली की आपूर्ति की है। 26,000 का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी पार नहीं हुआ था। पिछली साल भी पीछे के रिकॉर्ड टूटे थे, लेकिन फिर भी 26,000 के नीचे थी डिमांड, और परसों हमारी डिमांड 26,313 मेगावाट के ऊपर पहुंच गई थी। इस प्रकार हम ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने एक गांव में विद्युत की आपूर्ति करके मानती थी कि सारे पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति हो रही है। हम वास्तव में पूरे प्रदेश में बिजली दे रहे हैं। कहीं स्थानीय कारणों की वजह से, कहीं आंधी आ गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं तार टूट जाते हैं, कहीं स्थानीय एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन कारणों से कभी कभी विक्षेप होता है। उसे भी हम तुरंत ठीक करने का, तुरंत हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे पूरी तंत्र लगा हुआ है, जिसमें जितनी निर्बाध आपूर्ति हम दे सकें उसका पूरा प्रयास हम चालू है। तो बिजली क्राइसिस मतलब बिजली कटौती कहीं नहीं हो रही है, कोई फॉल्ट हो रहा है या लोकल लेवल पर कुछ ऐसा हो रहा है तो कट रही है, कोई कटौती सरकार की तरफ से नहीं की जा रही बिजली आपूर्ति? पूरे राज्य में हमारा जो रोस्टर निर्धारित है उसमें उसके मुताबिक हम विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं। कहीं आधे घंटे, कहीं 15 मिनट, कहीं 20 मिनट, कहीं स्थानीय कारणों की वजह से इस तरह के जो को विक्षेप आते हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रोडक्शन जो डिमांड जो है बहुत हाई है, 26 बताया आपने, ये रिकॉर्ड है, तो क्या हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि प्रोडक्शन उस लेवल पे आ पाए कि हम उस डिमांड को पूरा कर पाए, या कहीं प्रोडक्शन में कमी हो रही है जो डिमांड और सप्लाई में, कहीं चेन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? मतलब इसका ये होता है कि गर्मी बढ़ी है, गर्मी के बढ़ते लोगों का जो घरेलू कंजम्पशन है विशेष रूप से वो बढ़ा है, और उसके चलते जो पिछले सालों में जो डिमांड हुआ करती थी वो बढ़ करके पहले 18, 19, 20 का एवरेज हुआ करता था, इस समय 25 का एवरेज चल रहा है। तो इस प्रकार बिजली की मांग एकदम से बढ़ी है। उस मांग को हम पूरा करने के बहुत सारे हमारे जो संयंत्र हैं उनको ज़्यादा क्षमता पे चलाने का, इधर उधर से मार्केट से भी बिजली खरीद करके लोगों को आपूर्ति करने का, ये सारे प्रयास चालू हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पावर मिनिस्टर मतलब ऐसे कर रहे हैं कि बिजली कटौती नहीं होगी, लोग परेशान ना हो? बिजली की कटौती का कोई प्रश्न नहीं है। जो हमारा रोस्टर निर्धारित है उसके मुताबिक हम बिजली की आपूर्ति दे रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों से यह भी अपील मैं करता हूं कि बिजली की बचत भी एक बहुत बड़ा कार्य है।
बिजली की जितनी बचत करेंगे, जितना हम उसका संरक्षण करेंगे, प्रकृति का संरक्षण होगा, हमारे सबके लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जितना ऊर्जा की हम बचत कर पाएंगे उतना अच्छा है। And to discuss this further, I'm joined by our guest this evening, Mr. Harry Dhaul, who is the Director General of the Independent Power Producers Association of India. Thank you, Mr. Dhaul, for taking our time and joining us at Mirror Now. A very good evening to you, Mr. Dhaul. My first question to you would be, why do citizens have to suffer, especially in the months of summers? Because this is not a new phenomena. Every single summers, the consumption increases because these are hot months for the people in the National Capital Region especially. Why has there not been a review of the demand that is required? Because the government says that there is no problem with the supply. Where lies the problem then, Mr. Dhaul? Well, I've heard all the comments made by the various citizens who are suffering, and my sympathies with them. But let me just take your mind off to some facts and figures. The population of Delhi in the last 10 years has gone up by 83%, which means 83% more people today in Delhi are consuming power. Number two, the infrastructure which has been built in Delhi particularly is around 8,000 odd megawatts is the maximum. If you notice carefully what the power minister also mentioned, there is no shortage of power in terms of procurement. The shortage of the power seems to be in the infrastructure which has been set up and is now bursting at its seams because of the unusually hot weather. And this is something which is, if I may say so, difficult for anyone to plan, unless you're an astrologer, to know that there is going to be a record temperature in the month of May in 2023. And obviously, what needs to be done is lessons need to be learned and the infrastructure needs to be improved. But to the citizens, I would like to say, while I sympathize with what they are doing or the difficulties they are facing, I would like to say that they need to come up with strategies where they are able to consume less power and thereby meet their requirements. By just merely looking at inverter-based air conditioners and inverter-based or generator-based, this is not a solution really, and it's also very expensive. So you need to come out with strategies on how you can meet the situation, whether it is redesigning some interiors of your house or whether you want to relook at the way you function, the devices that you're having in your house, etc., so that you're able to manage in less. Where I'm coming from is the phenomenon of global warming and erratic weather is something which is a global phenomenon, and we are all as citizens suffering from it. If you remember, we had record cold temperatures in Delhi in the month of February. We had never seen such cold weather. And then in the month of March, we had the exact opposite happening. Then after the month of April, you had unseasonal rains across the country and also in parts of May, which is damaging the crops. So it's a sign, not just limited to the power infrastructure only. It's a sign that there's a global warming taking place. There's a climate change. In fact, if you go one step further, some of you who may be interested should monitor. There's a Mr. Dhaul, while climate change is a problem, there are various factors for that. But of course, the people who are the taxpayers essentially, why are they made to suffer? It specifically is happening in areas in Ghaziabad, it's happening in Gurugram, it's happening for 10 hours throughout the night, or it's happening sporadically for 3 hours or 4 hours. And there is no clear solution for this issue, and neither do they have any answers from the authorities that be. If the infrastructure is outdated, what is stopping the government or the state authorities to upgrade these infrastructure? Samia, the problem is not just upgrading the infrastructure. The problem is much deeper, and that is not just about taxpayers' money being not utilized or wasted or whatever. The issue is, how do you go beyond the envelope of what you're supposed to be having in an infrastructure? If you're supposed to have a 5,000 or 6,000 megawatt maximum consumption and you go up to 7,000 megawatts,
obviously the system is under stress because of climate change. So how do you, I mean, it's all right. I would say hats off to the government authorities for the whole of Delhi and even the country for managing April and May. We were anticipating huge power cuts and blackouts in India, but the government went out of its way, made arrangements for coal, made arrangements for all kinds of arrangements to make sure that the system worked. I would say that we've still more or less got over the worst part of summer. We have another 10-15 days before the monsoon hits and things ease off. But this is a lesson as to what we can do in terms of consuming less and setting up our lifestyles or modifying our lifestyles so that we don't suffer so much. Are you there, Samia? But like you were mentioning that, this is a problem where just upgrading the infrastructure is not going to help because the demand is increasing. Then why is there not a constant or an assessment of sorts to ascertain the kind of requirement and the demand that a specific area, in this particular case, the NCR requires, especially in the months of summers? Is that assessment taking place to keep in check whether at all the supply is matching the demand or not? We understand your concern about climate change, Mr. Dhaul, but the fact remains that the complaints coming from our residents that we have been showing throughout at Mirror now is that there is no upgrade, there is no assessment, there is no reach out from the government or the authorities end to hear the residents and their needs and grievances. May I slightly put it another way? The Delhi system was designed 10-15 years back to cater to a population base of say 1.5 crores. Today you cross 3, okay? And the same system is running as we speak and it's being upgraded as we speak. So while I understand the interim difficulty that is going on, but I'm sure the government is already, in fact, I can assure you, the government is taking steps already to improve the infrastructure fantastically. And I mean, just for a second, Delhi Airport, which has 4 runways, can't manage the traffic. So we have another airport coming up in Jewar. Why? Because the amount of people that are traveling or the amount of pressure on infrastructure is extremely high. You can see it on traffic on the roads. And the same thing's happening in luxury. So my humble submission to you is, government is doing a damn good job. They've managed April and May, and they are fully seized of the issues that are there right now. And they're doing the needful. But yes, I understand that there's suffering in the interim, and my sincere sympathies are with these people who are suffering. But they should also remember that the Delhi system, which was not designed for 3 crore people, is still somehow at least giving them some relief in the unbelievably high temperatures thanks to climate change, that they're getting power for 10, 15, 20 hours or 24 hours. I think that's commendable. Yes, there are some improvements done immediately. I'm sure they will. And I'm very happy to hear the UP minister saying that they are taking steps to sort out the infrastructure at the local level, because the basic problem is transformers burn out. They go old and they burn out, so you have to have a new transformer, which means more interruption of power for the people, etc. So work is going on. It's not that it's not happening, but yes, it can be speeded up. And I'm sure after your program today, the authorities concerned will take action both in Haryana, UP, and Delhi. Okay, obviously, sir, you are saying that the structure, the infrastructure is outdated and that needs an overhaul of sorts. But the fact remains that as of now, what is the SOS that we can possibly expect from the government's end? Well, I think the SOS that you can expect as a consumer is for government to encourage you to set up your own solar rooftop. So as the higher the temperature, you'll get your own power, at least for some part of your house. And I think some of the other things that can happen is they should encourage self-generation whenever required, and also encourage you to sell that power whenever there is a surplus. I mean, those kind of policy initiatives may, within 1 year, transform the situation dramatically. And that I think the government can do. And that also will make those homes which are totally dependent on the grid be self-dependent, at least to a large extent.
As you know, nowadays you get air conditioners with inverters, you get all kinds of devices which have storage capacity. If you can have storage and your own power generated through solar, perhaps a hybrid of solar and wind on top of your house, I think you'll make substantial progress. Well, that's very interesting, a conversation with you, Mr. Dhaul. Thank you for taking our time. It's been an enriching conversation with you. We are hoping that the people of the National Capital Region will be able to get some respite, and this is going to be fixed by the government, although there is no clear solution to these power cut and outages where the taxpayers are made to suffer. Thank you, Samia, but I want to say to all the citizens who are currently going through a crisis, please become aware of the climate change situation. We are all global citizens. We all must become more conscious of the way we live and the way we have using our resources. And I'd like to, while I sympathize with them, I would like them to use this opportunity in a positive way to become self-reliant and at the same time become more conscious of the climate change phenomena. Absolutely, Mr. Harry Dhaul. Thank you for joining us here at Mirror Now and sharing your views on this important subject that we were discussing at the Urban Debate.